Good evening, one and all. In the series of the PU webinar series under Parul University and by the Faculty of Arts and the Parul Institute of Arts, you know that we are organizing the webinar on regular basis, and we already conducted more than 70 webinar under this banner. So in this connection, today we have the stalwarts and the renowned economics of the country, Professor N.D. Mathur with us. Presently, Professor N.D. Mathur is Senior Professor in the Department of Economics, Director, School of Humanities and the Social Sciences at Manipal University, Jaipur. Professor Mathur has been a Senior Faculty Member of the Department of Economics, Administration and the Financial Management, University of Rajasthan, Jaipur. Besides this, he held the administrative position of Director, University 5-year law college and Director Administrative Services Pre-Training Center APTC, University of Rajasthan, Jaipur. Professor Mathur is the member UGC Committee on SAP in the Commerce and Management. He is the member of the UGC Committee deciding 2F status of the universities. He was also member of the UGC Committee for the Northeast Scholarship Project Ishan Uday. He is among us the rare professor who have enjoyed the full-fledged professorship in the discipline of the economics, commerce, and the management. Professor Mathur is a very senior assessor in the National Assessment and the Accreditation Council. Professor Mathur is an academician par excellence and has justified the various academic and the administrative position versus Dean Faculty of Management at the SMBD University, Jammu Kashmir and the Central University of Rajasthan, Kishangarh. He was the member Rajasthan University Syndicate and the Senate. He is the former director UGC Academic Staff College, the University Central Library, University of Rajasthan, Jaipur. Professor Mathur is an interdisciplinary expert in the field of the economics, commerce, management, academic training, administrative training, and the coaching. He has around 43 years of teaching experience in the various colleges and the universities. Professor Mathur has published around 70 research papers to his credit in reputed research journals, including Scopus Index journals. 36 students have been awarded PhD degree and the postdoctoral degree under his supervision. He has delivered around 2,000 special lectures as keynote speaker, chairperson, resource person, guest of honor in last 2 decades. He is a profile author and authored around 7 textbooks and 20 reference books, edited books in the field of the commerce management training. He is an expert academic trainer who imparts the soft skill training to the trainer. He is an extensive visitor of the various UG HRD centers of the country. As a teacher, he is loved by his students for his rotary skills and the humorous possibility in the teaching. Professor Mathur is the board member of the academic consultant in the project in the Vemula International, Bulimbo, Kenya, which is the reputed research-based NGOs of the Kenya. So on behalf of the Parul University, we welcome you, sir. On behalf of the Parul University management, we welcome you, sir. And on behalf of the Parul University president, sir, on behalf of the Parul University vice chancellor, sir, and on behalf of the Parul University registrar, sir, we welcome you, sir. We welcome you, sir. And request you, sir, please enlighten to us as a chief guest and speaker on today's webinar topic, the fostering creativity, and enlighten to our participants, enlighten to students, enlighten the media professional on today's webinar topic. Again, we welcome you, sir. We welcome you, sir. And now I over to you, Professor N.D. Mathur. Please enlighten to us on today's webinar topic, fostering creativity. I over to you, please, sir. And again, welcome to you, sir. Please, sir. Thank you, Dr. Rawat. Welcome, sir. My pleasure. I'm reminded of my friend Rawat, sir, who was at Manipal University earlier, and now he off and on. He talks to me and he has given many opportunities to interact at Parul University. So I'm extremely thankful to Parul University for having invited me for this task and this talk on fostering creativity. I thought I must talk on creativity because nowadays the new education policy talks about innovation and creativity and research and how we can inculcate creativity among the youngsters. So friends, I'm N.D. Mathur and Director of the School of Humanities and Social Sciences at Manipal University, Jaipur. Initially, I was at University of Rajasthan and retired from there. And look at this slide.
you see that at B, you will find the door gate of Parul University, PU, and this is an induction training on creativity. A situation is when you have at 4 o'clock you have joined this induction training on creativity, and at 5 o'clock will close. And A is 4 o'clock and C is 5 o'clock after 1 hour. And B is the door gate of Parul University. जल्दी आना पड़ेगा लोग ऑनलाइन है तो मैं तो रास्ते में होऊंगा ना उसमें जल्दी आऊंगा आपसे तो हम कर सकते हैं So friends, there is a difference in situation A and situation C, entry behavior and exit behavior. A is the entry behavior and C is the exit behavior. And you see there is a difference in entry and the exit behavior. आप लोग सब you may be laughing at me that 1 घंटे में क्या फर्क आ जाएगा कि 4 बजे की स्थिति और 5 बजे की स्थिति शायद फर्क पड़ जाए. अगर कुछ फर्क पड़ता हो तो मेरी सफलता है, कुछ फर्क ना पड़े तो मेरा फेलियर है. राइट? 5 बजे अपन बात करते हैं कि इस 1 घंटे की बातचीत से क्या कुछ परिवर्तन पर्सनालिटी में आ सकता है. And that is why there is a difference in entry and the exit behavior. Person who is making his exit after this creativity training of 1 hour, he seems to be much more smart, much more groomed, much more goal-oriented, much more disciplined, much more organized, and much more determined. We will see how much changes we can bring or we can discuss and how much impact is there. Friends, what exactly the creativity is or creative thinking is? Einstein का कहना है that creativity is imagination. How far you can see, कितना दूर तक आप देख सकते हैं. People who are creative, their mental age is higher than their chronological age. So creativity is putting things together to make unknown. Creativity is an exciting way of doing things. Creativity is an imagination. It is way to discover innovation. Or it is using all your senses with imagination. It is production of novel, useful product. Patent registration कराने आप जाएं, पहला सवाल ये होता है, what is the novelty? It is ability to assemble necessary body of knowledge to conduct a complete task. अब टास्क कंप्लीट होना जरूरी है. कोलैबोरेशन क्रिएटिविटी का जमाना है. कछुए में और खरगोश की रेस में अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन तेज भागता है. अब ये इम्पोर्टेंट है कि जहाँ मैदान है वहां खरगोश की पीठ पर कछुआ बैठा है और जहाँ पानी है वहां कछुए की पीठ पर खरगोश बैठा है और सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं. देयर इज कोलैबोरेशन क्रिएटिविटी बिकॉज टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड. इसकी स्पीड ज्यादा है, ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है. Then creating a chaos, sometimes creativity is creating a chaos. You have to make disruptions to make some construction. It is doing things laterally, not linearly. Creativity क्या है? चीजों को दूसरे तरीके से करना. Seeing what everybody see, but thinking which no one else has thought. जो सब देख रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं, लेकिन जो सब कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं. You are doing things in different manner. There have been many problems which we have solved in a different manner. So seeing things by everybody, but literally you are doing something else which no one else has thought. जो किसी ने नहीं सोचा वो आपने सोचा. हम सब इस करेक्शन को ढूंढ रहे हैं कि कश्मीर प्रॉब्लम का करेक्शन कैसे करें. But somebody did it and धारा 370 has been removed. That is doing things laterally, not linearly. Because linearly तो possible ही नहीं है. लीनियर सॉल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं था. इसमें 70 साल लगा दिए, लेकिन हम लीनियर सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए. लेकिन एक लेटरल सॉल्यूशन आया एंड वी करेक्टेड द प्रॉब्लम. सो फ्रेंड्स, व्हाई शुड वी थिंक क्रिएटिवली? आखिर हमें क्रिएटिविटी की जरूरत क्या है? व्हाई डू वी नीड टू बी क्रिएटिव? We need to be creative because
चेंज इज कमिंग एज ए वेमेंट फोर्स। जिंदगी में बदलाव बहुत तेजी से आ रहे हैं। पेस ऑफ चेंज इज फास्ट, बदलाव की गति बहुत तेज है। The speed of change is very fast. You see, in last 8 months, from earlier March to this March, in this 1 year, what has happened? सोसाइटी में कितने चेंज आ गए, ईटिंग पैटर्न्स में कितने चेंज आ गए, हमारी हैबिट्स में कितने चेंज आ गए, हमारी सोशल रिलेशनशिप्स में कितने चेंज आ गए। 1 साल में इतने बदलाव आ गए जो 15 साल में नहीं आ सकते। जो टेक्नोलॉजी एजुकेशन में हम 20 साल में नहीं सीख सकते थे, जूम पर काम करने की और गूगल मीट पर काम करने की और जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम पर काम करने की, ये टेक्नोलॉजी सीखने में टीचर्स को 10 साल लग जाते, हम 10 महीने में सीख गए, ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी हम लोग। तो चेंजेस आर कमिंग वेरी फास्ट and the pace of change is so fast that things are changing, becoming obsolete within 15 days, within 20 days. Rate of obsolescence has become very fast. एक चीज आती है 15 दिन में पुरानी हो जाती है, 20 दिन में पुरानी हो जाती है। चाइनीज गुड्स के लिए कहते हैं चले तो चांद तक नहीं शाम तक, तो अगले दिन आपको नई चीज चाहिए। हैंडसेट्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। एवरी 15 days देयर इज ए न्यू हैंडसेट। शादी और हैंडसेट के मामले में लगता है कि शायद 1 महीना ठहर जाते तो नया मॉडल मिल जाता। तो रेट ऑफ ऑब्सोलेसेंस इज वेरी फास्ट। And if goods can become obsolete, why I cannot become obsolete as a professional? As a professor, I can also become obsolete. As a teacher, as a student, you can also become obsolete. So even professionals can become obsolete if we don't keep pace with the change. बदलाव के साथ अगर हम नहीं बदलते हैं, बदलाव के साथ अगर हम कदम ताल नहीं करते हैं, तो हम भी पुराने पड़ जाएंगे। Because sometimes we confine with our time. हम टाइम में फंसे रहते हैं और हम टाइम से आगे की नहीं सोचते। Where I want to see myself after 10 years, I have to decide it today. So, just a minute. Hello. हाँ, कल मीटिंग हुई थी ना, तो उस रेफरेंस में हम तीनों ने साइन करके भेजा, तीनों ये सब तो आप दिखा लेना क्या? ये आप बता दें कि सर नौशा है, ये नंबर तय किया। So we need to be creative because we have to survive. Our survival is at the stake. If we will not be creative, it would be very difficult to survive. We will become obsolete. Expiry date आ जाएगी साहब हमारी उस दिन। So if we need to survive for a longer period, we need to be creative. Otherwise, we will become obsolete. बैंकों में जिन्होंने कंप्यूटराइजेशन नहीं सीखा, जिन्होंने आईटी के साथ कदम ताल नहीं किया, उनको रिटायरमेंट लेना पड़ गया, उनको प्री रिटायरमेंट लेना पड़ गया, नौकरी खत्म होने से पहले खत्म करनी पड़ गई। तो अगर हम साथ साथ कदम ताल नहीं करेंगे, बदलाव नहीं लाएंगे, एजुकेशन में हम मूक्स नहीं सीखेंगे, स्वयं की तरफ नहीं जाएंगे, ऑनलाइन टीचिंग की तरफ नहीं जाएंगे और नए जो बदलाव आ रहे हैं उनकी तरफ नहीं जाएंगे, तो हम भी खत्म हो जाएंगे। वी विल एबल टू सर्वाइव। सर्वाइवल तो आजकल इनफैक्ट इनोवेशन जो है वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमें सर्वाइव करना है। कॉर्पोरेट सेक्टर में इनोवेशन क्यों होते हैं? नए नए प्रोडक्ट्स क्यों आते हैं? बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव। एवरी डे यू हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। मैं उससे बेहतर कैसे करूं, तभी तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। हेलो यार, क्या? जस्ट ए मिनट, काइंडली वेट प्लीज। यार क्या? अच्छा, कर दो, कुछ कर दो प्लीज। ठीक है, कर दीजिए, मदद कर दीजिए। नहीं, मैं बता दूंगा, उनको बता दूंगा। ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। So creativity is survival. We all have to survive.
और अगर जिंदा रहना है, सरवाइव करना है, चाहे प्रोफेशन में जिंदा रहना है, चाहे समाज में जिंदा रहना है, चाहे आपको अपनी नौकरी बरकरार रखनी है, चाहे आपको अपनी डिग्री बरकरार रखनी है, वी ऑल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, वी हैव टू वर्क डिफरेंटली एंड क्रिएटिवली। आप देखिए पेंडेमिक में भी जिन्होंने क्रिएटिवली काम किया, दे ऑल सर्वाइव्ड। जिन्होंने इस पेंडेमिक को भी अवसर के रूप में देखा, दे ऑल सर्वाइव्ड। ये तो बहुतों की नौकरियां चली गई। सो ब्रेकिंग टाइम ट्रैप फोस्टर्स ग्रोथ। अगर आप इस टाइम ट्रैप को कहीं से तोड़ेंगे तो आप ग्रो कर जाएंगे। अंबानी का कहना है कि आई हैव क्रॉस्ड ऑर्बिट्स टू ऑर्बिट्स, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। तो इफ यू वांट टू ग्रो, यू हैव टू ब्रेक दिस टाइम ट्रैप। इस समय के जंजाल से बाहर निकलिए, 10 साल आगे की सोचिए, where you want to see yourself after 10 years. Then you have to begin the action plan to reach there. Look at this. What do you see in this picture? There's a leopard and a deer, and both are running. The deer is running for life, whereas leopard is running for the food. One who is running for the life or running for the food is also running for the life. Friends, when a leopard wakes up in the morning, he must be thinking that my running speed should be faster than the fastest deer in the jungle. Otherwise, I'll starve to death. And when a deer wakes up in the morning, the deer must be thinking that my running speed should be faster than the fastest lion in the jungle, otherwise I'll be killed. Any problem? Am I audible properly? Yes, sir, you are audible. So, whether we are leopard or we are deer, we all have to run, in fact. We all have to work hard. We have to all work very creatively. हम सबको दौड़ना है, और जो जितनी ऊंची पोजीशन पर बैठा है उसको उतनी तेज दौड़ना है। एक शायर ने कहा है कि बुलंदियां बहुत देर तक किसके हिस्से में रहती हैं, और ऊंची इमारतें हमेशा खतरे में रहती हैं। So higher the position you occupy, more work you have to do, hard work you have to do, creative work you have to do. जहाँ आप खड़े हैं वहां खड़े रहने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी आप। The place where I am standing, the chair which I am occupying, to continue on that chair I have to work hard, otherwise somebody will replace me. If somebody else can speak better than me on creativity, now they will not call me, he'll call somebody else. So you have to work hard to continue on your position. Now friends, what is creativity? Let us define. अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा क्रिएटिविटी इज अ वे ऑफ लाइफ। ये तो जिंदगी जीने का एक तरीका है क्रिएटिविटी। इट इज अ वे ऑफ लाइफ। बस में भागकर चढ़ते हुए, मेरा भाषण सुनते हुए, किचन में करची लाते हुए, मोबाइल की घंटी सुनते हुए, क्लास अटेंड करते हुए, ये सब करते हुए कुछ नया करना है हमें। अलग से छुट्टी थोड़ी मिलेगी, अलग से कोई फंड थोड़ी मिलेंगे। वी हैव टू डू समथिंग न्यू। हमको कुछ नया करना है, ये सब करते हुए करना है। कोई अलग से हमें इसके लिए फंडिंग नहीं मिलेगी, छुट्टी नहीं मिलेगी कि साहब कोई 2 साल की छुट्टी देगा या 2 लाख का प्रोजेक्ट देगा। यू डोंट नीड ए कारपेट टू थिंक बेटर, यू डोंट नीड एन एसी टू थिंक बेटर। सो क्रिएटिविटी इज गोइंग आउट टू फाइंड आउट द थिंग्स दैट सोसाइटी हैज जस्ट नॉट फाउंड आउट। चीजें तो वही हैं, लेकिन उनके नए इंटरप्रिटेशन ढूंढने हैं हमें। गोइंग आउट इज एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरिंग और नोटिसिंग द थिंग्स व्हिच आर ऑलरेडी देयर। लेकिन उन जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनमें वैल्यू कैसे ऐड करें, ये इंपॉर्टेंट है। उनके नए इंटरप्रिटेशन ढूंढ के हाउ टू ऐड वैल्यू इन द existing products. You all know that when mobile came, it was just incoming and outgoing instrument. But people have added number of facilities in this and added value of this mobile. 500 रुपए की चीज जो थी 1000 रुपए की थी वो लाखों तक पहुंच गई, क्योंकि वैल्यू एडिशन होता चला गया।
अब आप इसे नेफ्ट भी कर सकते हैं, ऐसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप पेटीएम भी कर सकते हैं, आप अलार्म घड़ी भी है, एक कैलेंडर भी है, सारे प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर दिया है। So value addition is important. Can you add value for your society? The students are listening to me. You know, you all are students, you all are first class, you all have very good English, then who will be placed? Placement किसका होगा? Those who can add value for the organization. नौकरी किसकी लगेगी? जो उस संगठन के लिए वैल्यू ऐड कर सकते हैं. Those who can add value for the organization, that is it. So value addition important है. Can you add value for the organization where you are working? अगर आप लाख रुपया कमा के दे सकते हो तो 80,000 रुपया या 50,000 रुपया आपको भी देगा वो ऑर्गेनाइजेशन. So add value. If you will add value, you will get share in that value. You will be placed. So there is a starting point, then there is exploration, then there is discovery, noticing the existing things, and then in new interpretations and making use by adding. Value add करिए साहब उसमें, तब जाके काम चलेगा. People have added value in this mobile and they have earned like anything. जो वैल्यू ऐड नहीं कर सकता उसके लिए मुश्किल है. आप देखिए, there were tears in the eyes of CEO of the Nokia when it was sold to Microsoft, that we could not keep pace with हम बदलाव के साथ तरक्की नहीं कर पाए एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी में, और नोकिया जिस पर हमें गर्व होता था माइक्रोसॉफ्ट को बेचनी पड़ गई साहब. क्यों बेचनी पड़ गई? क्योंकि इनोवेशन नहीं कर पाए, एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी में पिछड़ गए, वैल्यू एडिशन नहीं कर पाए. पहले जितने लोग ये देख रहे हैं प्रोग्राम, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो 9 डॉट्स बना लें अपनी नोटबुक में, अपना पेन खोल लें, नोटबुक खोल लें, 9 डॉट्स बना लें, राइट. और ये 9 डॉट बना करके टास्क है, कवर ऑल द 9 डॉट्स इन 4 स्ट्रेट लाइन. ये क्रिएटिविटी की एक्सरसाइज है. 4 लाइन में 9 डॉट कवर करने हैं आपको, और जो कंप्लीट कर लियो जरा मुझे व्हाट्सएप कर दे. मेरा नंबर बोल रहा हूँ 94140 71144. दोबारा बोल रहा हूँ 94140 71144. कवर ऑल द 9 डॉट्स इन 4 स्ट्रेट लाइन्स. 3 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आप लोगों को. कवर ऑल द 9 डॉट्स in 4 straight lines without lifting your pen. उठाना नहीं है पेन. If you have done it, you can send it to me. ये मुझे फेसबुक में नहीं मिल रहा रावत साहब. Yes sir, whenever go PU webinar है sir. हाँ, PU webinar. Yes sir. Okay, are you doing this exercise? Yes sir, but not able to do complete sir. I think you have some kind of some creative ideas required to complete, and beyond line to move that.
Okay, then let me show it to you. Yes, sir. Nobody has sent it to me so far. Maybe, sir, it is a difficult task for them. Look at this now. This is first line. This is second line. This is third line. And this is fourth line. And the task is completed. Now, how the task has been completed? Because we have crossed the boundaries. We are not confined in our time. We are not confined in the box, but we have gone out of the box. So creativity is crossing the boundaries of your thought. We have crossed it 2 times. And initially, the line has gone up to third point also, and then again the line has gone beyond the lines. So crossing the boundary, creativity is the crossing the boundary of your thought. Creativity is going out of box, right? Now this task is completed. There are 4 lines and the task is completed. So creativity requires trial and error. Creativity requires crossing the boundaries. Creativity requires thinking out of the box. Now we come to landscape of creativity. And landscape of creativity begins with linear thinking and lateral thinking. Thinking can be linear and thinking can be lateral. So linear thinking is one in which you are focused. चले हुए रास्ते पर चलना लीनियर थिंकिंग है और अनचले रास्तों पर चलना, कम चले रास्तों पर चलना, नए रास्तों की तलाश करना, ये lateral thinking, right? So linear thinking is traveling the path which is already traveled, and lateral thinking is creating your own path or traveling a path which is less traveled or untraveled. Linear thinking is convergent and lateral thinking is divergent. It is rational. 9 dot exercise में हम rationally कर रहे थे, solution नहीं मिला. It is one way of thinking. It is traditional, conservative, conventional. It gives you known solution that 2 plus 2 is 4. It is focused also. But lateral thinking is divergent. It is crossing the boundary of your thought. 9 dot exercise में solution कैसे मिला? जब हमने boundaries को cross किया. It gives you multiple answers to a problem. It gives you no known solutions which are not known to you. हमें पता ही नहीं था कि लॉकडाउन डिक्लेयर करने से भी गंगा साफ हो सकती है. एक हमें नो नोन सॉल्यूशन मिल गया कि अगर 7 दिन के लिए लॉकडाउन डिक्लेयर कर दो तो गंगा का पानी थोड़ा साफ हो जाएगा. करोड़ों रुपया खर्च करते रहे लेकिन काम नहीं चला. एक नो नोन सॉल्यूशन मिल गया. अभी कल ही मैं अखबार पढ़ रहा था कि पेंडेमिक के वैक्सीन की खोज करते करते अचानक कैंसर के कीमोथेरेपी से कैसे बचा जा सकता है उसकी खोज हो गई जर्मनी में. और एक्सीडेंटली एक नई खोज पता लग गई हमें, कैंसर से कैसे कीमोथेरेपी से बचा जा सकता है और उसके बिना भी कैंसर ठीक किया जा सकता है. कोशिश कर रहे थे टीका ढूंढने की पेंडेमिक का और मिल गया इलाज हमें कैंसर का. कोशिश कर रहे थे हम लॉकडाउन की डिक्लेयर की, गंगा का पानी साफ हो गया, एनवायरमेंट साफ हो गया. तो ऐसे क्रिएटिविटी समटाइम गिव्स यू नो नोन सॉल्यूशंस. इट इज नॉट कन्वेंशनल. It is trial and error. Alva Edison tried 1000 times to invent the bulb. 1000 बार कोशिश की उसने, तब बल्ब का आविष्कार हुआ. तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती. Outcome is not determined by given information, but it is determined by interpretation of the given information. देखिए सेब तो पहले भी गिरते थे. न्यूटन के टाइम में सेब गिरा हो ऐसा तो है नहीं. Apples were falling even before Newton, even after Newton. But Newton saw it and gave it, observed it and gave it a new interpretation in the form of law of gravitation. So outcome information से नहीं, information के interpretation से आता है. It is problem solving, it is
it can manage crisis, and it is kaleidoscope. तो सब ये फर्क है लीनियर और लेटरल थिंकिंग का। जब आइडिया नए जनरेट करने हो तो लेटरल थिंकिंग करनी चाहिए, क्योंकि लीनियर थिंकिंग से नए आइडिया जनरेट नहीं होते। कन्वर्जेंट थिंकिंग वो है चले हुए रास्तों पर चलना। अगर आप चले हुए रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, जहाँ लोग पहले से पहुंच चुके हैं। लेकिन जब आप नए रास्तों की तलाश करेंगे तो आप कोलंबस हो सकते हैं, वास्को डी गामा हो सकते हैं। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप अपना पेन खोल लीजिए और नोटबुक भी खोल लीजिए और मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुनिए अच्छी तरह। अभी माइक बंद रखिए, जब मैं खोलने के लिए कहूँ तो कुछ लोग माइक खोल सकते हैं, एक दो लोग, और बात कर सकते हैं मुझसे। तो नोटबुक खोल लीजिए, पेन खोल लीजिए। इंस्ट्रक्शन ये है कि जब मैं कहूँ स्टार्ट तो आपको उल्टी गिनती बोलनी है मन में ही। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92 लाइक दिस। जब आप उल्टी गिनती बोल रहे होंगे तो मैं धीरे धीरे एक एक करके सवाल कुछ रखूंगा आपके सामने, जिनके जवाब एक शब्द में होंगे। वो बोलने नहीं है, लिखने हैं आप। तो आप गिनती भी बोलते रहेंगे और जवाब भी पेन से लिखते रहेंगे कॉपी में। और जब मैं स्टॉप कहूं तो आप वहीं रुक जाएं अपनी गिनती, जहां भी है। 62 पे है तो 62 पे, और अगर 78 पे है तो 78 पे, जहां भी आपकी गिनती है वहां रुक जाए। लेकिन उल्टी उल्टी बोलनी और फास्ट बोलनी है, राइट। और जब मैं स्टॉप कहूं तो रुक जाए। 4-5 सवाल पूछूंगा जिनके जवाब एक शब्द में होंगे, जो आपको आते भी होंगे, आप लिख लें बस। तो स्टार्ट प्लीज। Write the name of a flower. Write the name of a flower. My second question. Write the name of a fruit. Now, third question. Write the name of a color. Fourth question. Write the name of a university. And stop. जहां भी है वहां गिनती रोक दीजिए। चलिए एक दो लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, मैं उनसे बात कर सकूं। देखिए पहला सवाल था मेरा, राइट द नेम ऑफ ए फ्लावर। कितने लोगों ने रोज लिखा है? जरा रिस्पॉन्ड करिए माइक खोल के, यस और नो। Yes, sir. Okay. Others have also written, or their mic is muted. You can unmute yourself and say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Then another question. फ्रूट, फ्रूट में एप्पल और मैंगो कितने लोगों ने लिखा है? Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन, कलर में रेड कितने लोगों ने लिखा है? Yes, sir. फोर्थ क्वेश्चन, कॉलगेट कितने लोगों ने लिखा है? फोर्थ वॉज टूथपेस्ट। The university name. यूनिवर्सिटी नेम, पारुल यूनिवर्सिटी कितने लोगों ने लिखा है? Yes, sir. So it means we all are accustomed of following the patterns. We don't create the pattern. हम लोग सब एक सा ही सोचते हैं। यहाँ अगर 100 लोग बैठे हैं और सबके सब रोज और रेड एंड एप्पल एंड पारुल यूनिवर्सिटी लिखते हैं, तो फिर सबकी क्या जरूरत है? एक जने की जरूरत है, एक जना सोच लेगा सबकी तरफ से। We must create a new path. We should be creative thinkers. We should not be linear thinkers. We should be lateral thinkers. If you want to do any miracle in your life, then you should be creative. Don't follow a pattern, but create a pattern. We need to create a pattern in that case.
आप इसरो को देखिए, इसरो हैज क्रिएटेड ए पैटर्न। कितने स्पेस क्राफ्ट, कितने देशों के एक साथ, 104 देशों के एक साथ छोड़े इसरो ने। इसरो आज सबसे मोस्ट क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन हो गया। Why IIMs and IITs are known? Because they are creative organizations. They don't follow the patterns, they create the patterns, then others follow them. Infosys or Tata, they don't follow the patterns, they create the patterns. Reliance, Infosys, Tata, Wipro, they create the pattern. They don't follow the pattern. Now, stages of creativity. Creativity has 5 stages: preparation, incubation, intimation, illumination, and verification. जब आप किसी समस्या के प्रति बॉदर करते हैं, then you are in preparation stage. Something should bother you. Conceiving a problem is preparation stage. लेकिन प्रॉब्लम के समाधान तुरंत नहीं मिलते हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ता है, फॉरगेट करना पड़ता है, समाधान से दूर होना पड़ता है। दैट इज इंक्यूबेशन। फिर अगर आप समाधान के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो दैट इज इंटीमेशन। और अगर समाधान मिल जाता है तो इल्यूमिनेशन है। एज इफ लाइट स्विच इज ऑन, सम हैप्पी आइडिया haunts your mind or something clicks your mind. So that is illumination, eureka moment in your life. And last is verification, that whatever idea which has come to your mind works or not, you have to verify, justify, validate it. And this is verification stage. So creativity has 5 stages: preparation, that is conceiving a problem; incubation, going away from the problem. कभी कभी क्या होता है कि good ideas they come at a very bad time when you are driving or you are dining, and they are slippery also. They come very quickly and they go back very quickly. So whenever a good idea haunts your mind, please note it down so that it can be retrieved. Then it is intimation, illumination. Illumination यूरेका मोमेंट है आपकी लाइफ का, जब समाधान आपको मिल गया। आप सबने आर्किमिडीज का नाम सुना होगा। He was a mathematician and he conceived a problem how to find out the volume of an irregularly shaped object. जब वो बाथ टब में था तो उसको आइडिया आया कि my body is entering the water and the water is being displaced. Probably this displaced water is the volume of my body, and this way I can solve my problem. And he shouted, "Eureka, Eureka, Eureka!" मिल गया, मिल गया, मिल गया. So these are the 5 stages of creativity. चलिए, अभी हमने एक एक्सरसाइज की थी लीनियर और लेटरल थिंकिंग की, उल्टी गिनती की। उससे पता चला कि हम लीनियर थिंकर हैं, लेटरल थिंकर नहीं है, क्रिएटिव थिंकर नहीं है। चलिए, आज से हम तय करते हैं हमें क्रिएटिव थिंकर होना है। तो मैं जो आपसे कह रहा था ना, ये घंटे में कुछ बदलाव आना चाहिए, वो मौका आ गया। ध्यान से सुनिए मुझे जरा। आज से हम अगर ये तय करते हैं हमें क्रिएटिव होना है तो क्या करें? तो मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं आज, that will make you creative. This mantra has to be followed as per my instructions. उस मंत्र का नाम है आसरा, ASARA, आसरा, MOMONA, मोमोना। इस मंत्र को आपको क्या करना है, सुनिए। A for add. आप लोगों की जिंदगी में अगर कुछ जोड़ते हैं तो भी आप क्रिएटिव हैं। Add something in the life of the people. Can I add something in the life of my students? Can I write a good book for them? Can I deliver good lectures to them? Can I give good notes to them? Can I imbibe good skills in them? आप लोगों में कुछ जोड़ के भी क्रिएटिव हो सकते हैं। If you cannot add, then as for subtract. आप जोड़ नहीं सकते तो घटाकर भी क्रिएटिव हो सकते हैं। अगर आप एक लंबी लाइन को छोटा कर सकते हैं, मोबाइल का वजन कम कर सकते हैं, या आप कोई चीज नई इजाद करके उसका वजन कम कर सकते हैं, then this is creativity by subtraction. 1 GB की जगह आप देखिए 16 GB, 20 GB, 38 GB, 48 GB की पेन ड्राइव आ गई। This is creativity by subtraction. अगर आप जोड़कर या घटाकर नहीं कर सकते तो ऑल्टर करके, आगे पीछे करके भी कुछ नया कर सकते हैं।
आगे की चीज को पीछे कर दीजिए, पीछे की चीज को आगे कर दीजिए, ऑल्टरनेशन हो जाएगा। आप आल फॉर रीअरेंज करके भी क्रिएटिव हो सकते हैं, पैटर्न बदल के देखिए, सीक्वेंस बदल के देखिए, पैकेजिंग बदल के देखिए। पाउच पैकेजिंग आने से धाबी में रहने वाला आदमी भी शैम्पू से नहा सकता है उस 1 रुपए की, लेकिन अगर आप बॉटल पैकेजिंग रखेंगे तो नहीं नहा सकता। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आर रीअरेंजमेंट फॉर प्रॉफिट्स। इंटीरियर डेकोरेटर क्या करता है, आपका ही सोफा है, आपकी पेंटिंग है, आपका ही सामान है, तो अरेंज करता है और आपसे पैसे लेके चला जाता है। एंड देन ए फॉर एडप्ट, चीजों को लोगों की आवश्यकता के अनुकूल कैसे बनाया जाए, एडजस्ट, रिएक्ट, अडप्ट। जयपुर फूड का नाम सुना है आप लोगों ने? जयपुर फूड इज एन आर्टिफिशियल नेम फॉर एक्चुअल फूड। Yes. चंदन के डांस, चंदन का एक्सीडेंट हो गया, शी अप्लाइड जयपुर फूड, आर्टिफिशियल नेम लगा के आज डांस भी कर सकती है वापस। सो आसरा इज ऐड, सब्ट्रैक्ट, ऑल्टर, रीअरेंज एंड अडॉप्ट। कुछ जोड़िए, कुछ घटाइए, कुछ उल्टा पुल्टा करके देखिए, कुछ रीअरेंज करके देखिए, पुनर्व्यवस्थित करके देखिए, कुछ लोगों के अनुकूल चीजों को बनाने की कोशिश कीजिए। दिस इज आसरा बाय विच यू कैन बी क्रिएटिव। देन मोमोनायम फॉर मैग्नीफाई, छोटे आइडिया से बड़ा आइडिया निकालना। ये ईवीएम मशीन बनी, छोटा आइडिया आया, लेकिन धीरे धीरे आप देखिए बैलेट पेपर छपने बंद हो गया। नए इलेक्शन जो होते हैं सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम मशीन से कराता है। पूरे भारतवर्ष में बूथ कैप्चरिंग की समस्या ही खत्म हो गई, क्योंकि बैलेट पेपर ही नहीं है, लेके क्या भागेगा, कुएं में क्या डालेगा। देन वो फॉर अपोजिट्स, कभी कभी शीर्षासन करना पड़ता है, सब चीजें उल्टी करने से भी सीधी हो जाती है। If things sterilize at the boiling point, they can also sterilize at the freezing point. डिफ्लेशन को दूर भगाना है तो इन्फ्लेशन को लाइए। आउटसोर्सिंग क्या है? Opposites are working, man is not going to job, job is coming to man. बीपीओ और केपीओ के जॉब सारे इंडिया आ रहे हैं, देखिए। Then M for minify, बड़े आइडिया से छोटा आइडिया, छोटे से बड़ा नहीं कर सकते तो बड़े से छोटा करके देखिए। नैनो टेक्नोलॉजी इज ए फील्ड ऑफ मिनिफिकेशन। पहले कंप्यूटर जब मैंने देखा था 77 में, तो इट वाज इन अ बिग हॉल। नाउ कंप्यूटर पाम पे आ गया, हथेली पर आ गया। देन ओ फॉर अदर यूजेस, अन्य प्रयोग ढूंढिए चीजों के। हरियाणा के गांव में हेयर डाई और चेरी पॉलिश की डिमांड 10,000 गुना बढ़ गई। सीईओ गया देखने, वहां क्या हुआ, देखा वहां बफेलो मेला लग रहा था, एंड हेयर डाई एंड चेरी पॉलिश वाज बीइंग अप्लाइड ऑन बफेलोज so that they look young and fetch better price. New ways of utilization, नए प्रयोग ढूंढिए चीजों के। अब देखिए ढाबों पर वॉशिंग मशीन लस्सी बनाने के काम आ रही है आजकल। 200 गिलास एक साथ लस्सी बन जाती है वॉशिंग मशीन। आपको पता है 3 इडियट्स में वैक्यूम क्लीनर से डिलीवरी करवा दी थी आमिर खान ने। तो नए प्रयोग ढूंढिए उन्हीं चीजों के जो एग्जिस्टिंग चीजें, क्या नए प्रयोग हो सकते हैं। वही कानून थे, वही इलेक्शन कमीशन था, लेकिन टीएन शेषन आया, उन्हीं कानूनों से इलेक्शन कमीशन खड़ा हो गया। कोई नए कानून थोड़ी बने। तो न्यू वेज ऑफ यूटिलाइजिंग, वही चीज है, लेकिन उनको नए प्रयोग कैसे ढूंढे जाए। एंड अल्टरनेटिव्स, क्रिएट अल्टरनेटिव्स। यू कैन क्रिएट अल्टरनेटिव, यू आर ट्रबल शूटर। लकड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, टिन के दरवाजे बन जाएंगे। टिन भी नहीं है तो प्लास्टिक के बन जाएंगे। अब देखिए प्लास्टिक के दरवाजे बनने लगे आजकल। अगर हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक वाटर नहीं है तो कोई बात नहीं, समथिंग एल्स विल कम। जस्ट ए मिनट प्लीज। HOD art. So
If you can create alternative, you are a troubleshooter. तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक नया मंत्र दिया है आज, आसरा मोमोना, एंड दिस इज, झील में पत्थर उछाला जाए, हलचल ना हो, ये तभी संभव है जब झील में बूंद भर भी जल ना हो। कुछ जोड़िए, कुछ घटाइए, कुछ उलट पुलट करके देखिए, कुछ पुनर्व्यवस्थित करके देखिए, कुछ लोगों के अनुकूल बन के देखिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ छोटा करिए, कुछ उल्टा करिए, कुछ नए प्रयोग ढूंढिए, कुछ अन्य प्रयोग ढूंढिए, कुछ विकल्प ढूंढिए। आप कुछ करिए तो सही। हम तो कंफर्ट जोन में रहते हैं, कंफर्ट जोन तोड़ते ही नहीं अपना। आप देखिए इन गांव वालों को, यू डोंट नीड ए डिग्री टू बिकम क्रिएटिव। कोई पीएचडी होने की जरूरत थोड़ी क्रिएटिव होने के लिए। देखिए ये लोग कितने क्रिएटिव है गांव वाले, ये कौन सी डिग्रियां लेके बैठे, लेकिन देखिए इनका क्रिएटिव नमूना देखिए आप, हाउ क्रिएटिव दे आर। ये देखिए एक साइंस टीचर की क्रिएटिविटी दिखाता हूं आपको। See the creativity of the science teacher. ये क्लास में देखिए कितनी तैयारी से गया है और एक क्राफ्ट बनाकर ले गया, एक एक ऑर्गन बच्चे को सिखाने के लिए। See the creativity of the science teacher. तो रिसोर्सेज थोड़े चाहिए, दिमाग चाहिए साहब आइडिएशन के लिए। तो कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। देखिए बिलियर्ड खेली जा रही है, ये बिलियर्ड टेबल देखिए इनकी, कौन से रिसोर्सेज रास्ते में आ रहे हैं क्रिएटिविटी के। क्रिएटिविटी के सोर्सेस क्या है? इनोसेंस, एक्सपीरियंस, मोटिवेशन, स्टाइल, एक्सीडेंट, रिलीज, ट्यून माइंड, लेटरल थिंकिंग। दीज आर द सोर्सेज ऑफ क्रिएटिविटी। अगर आप अच्छा आइडिया दे सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, इट इज आइडिया क्रिएटिविटी। अच्छी किताब लिख सकते हैं, इट इज मटेरियल क्रिएटिविटी। अगर आप अचानक कोई एक्सीडेंट देखकर भी उस एक्सीडेंट को बचा सकते हैं तो स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी है। किसी इवेंट पर आप क्रिएटिव हो सकते हैं। आपको पता है 1893 में शिकागो में विवेकानंद ने एक भाषण दिया था, आज तक उस भाषण को लोग याद करते हैं। दैट वाज द इवेंट क्रिएटिविटी। कई बार पूरे संगठन क्रिएटिव होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नोन फॉर क्रिएटिविटी, आईआईटीज आर नोन, आईआईएम्स आर नोन। दिस इज केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्रिएटिविटी। अगर आप अच्छी दोस्ती भी दुनिया को दे सकते हैं, इट इज रिलेशनशिप क्रिएटिविटी। तेंजिंग और हिलेरी का उदाहरण लीजिए। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला पांव या तो तेंजिंग का पड़ा होगा, हिलेरी का, पर दोनों दोस्तों के नाम साथ आते हैं। इनर क्रिएटिविटी जो बच्चे में होती है। चाइल्ड इज प्राइमरीली क्रिएटिव क्योंकि उसने कुछ गलत बात सीखी ही नहीं है अभी तक। हम क्रिएटिव क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बहुत सी गलत चीजें सीख ली। तो लोग क्रिएटिव होते हैं, उनकी खासियत क्या है? They are vibrant, they are moody, they are emotional, they have independent judgment, they want intimate relationship, they have childlike fantasy, they are complex to be understood, they are fascinating. जॉन मिल्टन अंधा कवि था, लेकिन प्रकृति का सौंदर्य जो पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड किताबों में लिखा है, देखिए जब। फिराक गोरखपुरी साहब उर्दू शायर थे, वैसे अंग्रेजी के प्रोफेसर से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड जब दिया गया तो इंदिरा गांधी चीफ गेस्ट थी और मंच से कहा गया कि अब फिराक साहब आए और ज्ञानपीठ अवार्ड लें। ये तो अपने सोफे से उठे ही नहीं। कहीं जवाहर की बेटी से कहो नीचे आके दे जाए, मैं बूढ़ा आदमी का ऊपर आऊंगा। एंड मिसेस गांधी टू गो डाउन, ही डिडंट गो अप। सो दीज आर द traits ऑफ क्रिएटिव पीपल। वाइब्रेंट होते हैं, मूडी होते हैं, अपना निर्णय खुद लेते हैं, चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो या एक तरफ हो। अच्छे दोस्त होते हैं, चाइल्ड लाइक फैंटेसी विदाउट बीइंग चाइल्डिश। इनको समझना कठिन होता है, इनकी हिडन स्ट्रेंथ होती है। क्रिएटिविटी के रास्ते में बाधा क्या है साहब? बाधा ये है
कि कभी कभी हमें असफलता का डर सताता है, अनिश्चितताएं सताती हैं, लोग हंसेंगे हम पर। मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ सालों पहले मैं एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। रिसर्च के संबंध में मेरी यूनिवर्सिटी में मीटिंग चल रही थी। तो किसी महिला ने अचानक कहा कि साहब अब तो सेमिनार क्या वेबिनार होनी चाहिए अब तो ये टर्म किसी ने सुनी ही नहीं थी उस वक्त तक। 10 साल पहले तक वेबिनार क्या होती है, शायद 10 साल पुरानी भी नहीं, 7-8 साल पुरानी बात है। तो पीपल लाफ्ड एट हर कि पता नहीं ये कैसी है, वेबिनार की बात करती है, कौन क्या होता है वेबिनार। और आज आप देखो, रोज कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में एक वेबिनार हो रही है। सो पीपल में लाफ एट यू बिकॉज यू आर ब्रेकिंग ए सोशल नॉर्म। जिन लोगों ने सुना ही नहीं, सब लोग तो हंसेंगे। लैक ऑफ इमेजिनेशन, अगर आप में ड्रीम्स देखने की क्षमता नहीं है तो साकार क्या करोगे। अगर आप टची हैं, आप में ईगो है, देन यू कैन नॉट बी क्रिएटिव। नैरो माइंडेड है, यू कैन नॉट बी क्रिएटिव। ये एक चीज होती है अनकॉन्शियस अननोन। हमें से बहुत से कोई पता ही नहीं है कि हमें क्या पता नहीं है। अब मैंने बहुत सी नई चीजें आज आपको बताई, तो अभी हो गया कॉन्शियस अननोन। अब आपको पता है कि आपको क्या पता नहीं है। अब शाम को गूगल में पढ़ लिया आपने तो पता लग जाएगा, इट विल बिकम कॉन्शियस नोन कि आपको पता है कि आपको क्या पता है। पर चौथी चीज है अनकॉन्शियस नोन, कि हमें से बहुत से को ये भी नहीं पता कि हमें क्या पता नहीं है। होता है राउत साहब ऐसा, हमारी पोटेंशियल का पता नहीं होता है। Yes, sir, I agree with you. Nobody's हमारी know. क्षमता क्या है। Yes, sir. तो मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछूं रावत साहब की, 1 किलोमीटर पैदल जाना है, आप कितनी देर में जा सकते हैं? पता नहीं है सर, डिपेंड करता है कि बॉडी को कितना टाइम लेगी। अच्छा ना, अंदाजा बताइए, एनी अप्रोक्सीमेट आइडिया। 10 मिनट तो मानिए सर कम से 10 मिनट। अच्छा मान लीजिए 1 लाख रुपए का इंसेंटिव, आप कितनी देर में जा सकते हैं, कितना रिड्यूस करेंगे? कम। डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि मेरे पास पैसे का इंपॉर्टेंस कितना है मेरे में। हाँ तो बताइए जरा, 10 मिनट से कितना घटाएंगे इस इंसेंटिव के लिए? हो सकता है सर 9 मिनट 8 मिनट में पहुंच जाए। 8 मिनट में पहुंच जाए। और मान लीजिए एक बहुत तेज भागने वाला कुत्ता छोड़ दिया जाए आपके पीछे, तो आप कितनी देर में पहुंच सकते हैं? जिंदगी बचाने का सवाल है तो 1 मिनट भी शायद 2 मिनट में। तो देखिए 2 मिनट प्रतिभा 2 3 मिनट मिनट में की भाग है। जाए। He started with 10 minutes and he has potential of 2 minutes only. उनको नहीं पता था ये काम 2 मिनट में कर सकता हूं मैं, लेकिन somebody chased him, then it was done. तो अगर आपको आपकी प्रतिभा का पता लगाना है तो go to your mentors. Your mentors will tell you what is your potential. हनुमान जी को किसने बताया था कि आप समुद्र लांघ सकते हैं? किसने बताया था? उन्हें उन्हें स्मृतियां याद दिलाई गई थी सर, जिस समय उनसे समुद्र पार करवाना किसने था। दिलाई थी? Who was that person? आई थिंक सर जामवंत जी थे उस समय, उन्होंने दिलाया था जहां तक मुझे ध्यान आ। हाँ तो जामवंत, we need mentors like जामवंत. We all need Jamvans in our life to tell us what is our unconscious no. So friends, I'm coming at the last part of my lecture. Excellence का मतलब ये नहीं है कि हम वाइस चांसलर बन जाए, या हम प्रेसिडेंट बन जाए, या चीफ मिनिस्टर बन जाए, या मिनिस्टर बन जाए। एक्सीलेंस का मतलब है कि wherever you are, whatever you are, you must be best. ये होता है एक्सीलेंट एंड सक्सेसफुल। कुछ लोग एक्सीलेंट भी है और श्रेष्ठ भी है और सफल भी है। Nehru was excellent, Nehru was successful. Patel was excellent, Patel was successful. Modi is excellent, Modi is successful. पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो श्रेष्ठ होते हुए भी सफल नहीं होते। Like Subhash Chandra Bose was excellent but not successful. Rana Pratap was excellent but not successful. Lakshmi Bai, Jhansi की रानी was excellent but not successful. तीसरे वो है जो श्रेष्ठ नहीं है फिर भी सफल है, वो भाग्य की खान है। और चौथे वो है जो न श्रेष्ठ है न सफल है। लेकिन इतिहास पूजा उनकी करता है जिनके पास ऑनेस्टी ऑफ पर्पस हो, चाहे वो सफल हुए न हुए। मोदी इज नॉट वर्शिप्ड, नेहरू इज नॉट वर्शिप्ड, बट राणा प्रताप इज वर्शिप्ड, झांसी की रानी इज वर्शिप्ड, Subhash Chandra Bose is worshipped. Why? Because they were excellent people. They fought for a cause, whether they succeed or not, did not succeed, it doesn't matter. So friends,
It is said that necessity is the mother of invention. आवश्यकता आविष्कार की जननी है. नेसेसिटी का मतलब है हमारी समस्याएं और आविष्कार है समस्याओं के समाधान. लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं के समाधान निकले. Somebody is working that you have been brought to my lecture. Somebody is working that I have been invited for this lecture. Somebody is working that the link for this lecture has been generated. People are constantly, persistently working to make our life comfortable. Are we doing something to make others' life comfortable? If we are not doing, we should start doing it so that we can become creative. Friends, with this I close my lecture with an Urdu couplet. हमको नई रविश के हल्के से कर रहे हैं और बातें तो बन रही है पर घर चल रहे हैं. पुरानी और नई रोशनी में फर्क सिर्फ इतना है कि उसे कश्ती नहीं मिलती, इसे साहिल नहीं मिलता. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your wonderful talk and master talk. And we are receiving the few questions. That the question is I'm there sir, to answer questions. Yes. What is the role of the creativity and in the happiness and the character building, sir? Role of creativity in happiness and character building. Creativity का रोल इतना है कि अगर आप कुछ इजाद कर पाए, कुछ नया कर पाए, it will bring happiness. क्योंकि अचीवमेंट होगी, अचीवमेंट से हैप्पीनेस आएगी और हैप्पीनेस से आप समाज में ज्यादा और खुशी स्प्रेड कर पाएंगे और समस्याओं का समाधान दे पाएंगे. और आखिर कुल मिला के इनोवेशन का सर्वाइवल, सारा जो मदर ऑफ ऑल सर्वाइवल इज इनोवेशन. आप सर्वाइव ही कर पाएंगे जब आप इनोवेशन कर पाएंगे. सो फ्रेंड्स, मेरा तो ये कहना है कि अगर आप क्रिएटिव होंगे तो आप अचीवमेंट्स अच्छी कर पाएंगे. अचीवमेंट अच्छी कर पाएंगे तो आप जो है वो खुशियां बिखेर सकेंगे. दैट इज इम्पोर्टेंट. And what kind of the tips you want to give for the develop the creative thinking, sir? मैंने आश्रम बताया ना, आश्रम होना, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ऑल्टर, आश्रम होना, ये ना. Yeah, ये मंत्र and same is used in the teaching pattern, sir. Yeah, you can use in teaching also. Teaching में भी कर सकते हैं उस आश्रम होना. Okay, sir. So thank you very much, sir. I think we are near about our time is around 4:57, and as per our technical team, we will close this around 5. So before the close this webinar, I want to put the concluding remark of today's webinar, sir, on your master talk on the creativity. So you tell in your entire session and lecture about the lateral of the creative thinking and the collaboration of the creativity and the task completed and doing the thinking is different manner. You told about the why think in creativity. और एक शेयर भी आपने बीच में कहा कि चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक. एक चीज आपने बताई जो चाइना के प्रोडक्ट को लेकर के आपने बताया. और वक्त के साथ चलना चाहिए और हमें बदलना चाहिए, नहीं तो वक्त हमें बदल देगा या फिर हम असफलताओं के शिकार हो जाएंगे. ऐसा भी आपने अपनी क्रिएटिविटी में बताया कि टाइम के साथ चलने के साथ हमें समय से आगे भी सोचना चाहिए. वी शुड थिंक अबाउट द after the next 10 years we will be there or what will be there, what we will do after 10 years. So we think today and we can implement the things and we can get the goal and the target. Creativity is required for the survival. Giving the example, give the example of the leopard and the deer, and vice versa. Both are the doing struggle for the life, sir. And बाद में आपने एक शेर भी बताया कि बुलंदियां बहुत दिनों तक किसके हिस्से में रहती है, ऊंची इमारतें तो हमेशा खतरे में रहती है. It means if you are on the higher position, then you should think more and more and you implement the things more and more and you prove the more and more to yourself on the higher position and higher level. You also told about the value addition, add the values in the society, add the values in every day and day to day life in the working, and add the value in each and every field. And you quote the example of the Nokia, and at that times you have the tears, the one of the Nokia when they sold this entire company to Microsoft. So creativity crossing the boundary of the things, and you quote the example, you give the task which is related from the how we can cover the entire non-dot with the help of the 4 lines. So it's a good example कि हम किस तरीके से boundary को cross करते हुए हम target हासिल करते हैं. And you told about the stages of the creativity and the checklist of the creativity, and Ashram Momona told how we can develop the
creativity like add, subtract, alter, and the rearrange and adapt. Through Momana, you told about the magnify, opposite, and minify other uses, new ways of the alteration, alternative ways of the production. And you also quote the various example which is related from the villagers. They don't have the PhD degree, but they have the creativity. You show the photograph about that. And you also told about the types of the creativity like idea creativity and material creativity, spontaneous creativity, event creativity, organizational creativity, relationship creativity, inner creativity, and the preliminary creativity. You told the creativity, personality, and blocks of the creativity, excellence in the creativity. You discuss about the conscious, unconscious, and the various other things which is related of the creativity. So definitely, sir, with your master talk, we learn a lot of the things. This is not only a master talk, we can say the encyclopedia of the creativity, which come through your experience with the various kind of the example is quoted by you. And you also quote the Indira Gandhi को भी एक creative थे तो उनके लिए मंच से नीचे उतर के उनको अवार्ड देने के लिए आना पड़ा. And you quote the various kind of the example. So thank you very much, sir. You enlightened to us about the creativity, and you enlightened to us do something in your the life to achieve the target and to achieve the new dimension of the career. So thank you very much, sir, on behalf of the Parul University, on behalf of the Parul University management, on behalf of the Parul University president sir, vice chancellor sir, and registrar sir. एक सिंपल सा कॉल मैंने आपको किया और आपने पहले निवेदन में मेरा निवेदन स्वीकार करके और आज फोस्टिंग क्रिएटिविटी पर आपने अपना जो ये अद्भुत वेबिनार आपने दिया है, स्पीच दिया है एज ए चीफ गेस्ट ऑफ दिस वेबिनार. We thankful to you, sir, again and again. We thankful to you, sir, and we want to see to you again and again on PU webinar platform. I am so thankful to our PU webinar technical team, जिन्हें हम कभी भी कहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमेशा तैयार रहते हैं वेबिनार के लिए बिना किसी टेक्निकल ग्लिचेस और डिफॉल्ट के सफलतापूर्वक हमारा वेबिनार का आयोजन करने में हमारा पूर्ण सहयोग उनके साथ में रहता है. We are also thankful to all the faculty members, those faculty members or communicate to the students to join the webinar. They always support to us and they always promote the webinar on the various platform on social media as well as in the peer group. So thank you very much. Thank you to all. Those are the directly or indirectly to make successful this webinar. And again, thank you very much, sir. We want to see you again and again on this PU webinar platform. Thank you very much, sir. Professor Andy Mathur sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Rao. Thank you very much.